in Balushaeducare. Today I'm going to explain the poem The Sower by Victor Hugo, which is translated in English by Torulata Dutt. The poem gives a message to reader, or it encourages the reader to be like the sower, to be firm, to be dedicated like him regardless of whatever comes to their way. दोस्तों, ये पोयम किसान के बारे में है और किसान जो अपना खेती में काम करता है विदाउट थिंकिंग ऑफ व्हाट विल बी आउटकम ऑफ हिज ग्रेन, व्हाट विल बी आउटकम ऑफ हिज harvest, whatever he is tossing in the grain. So in this poem gives an account of an old farmer who is sowing seed. By scattering them, he is doing with determination, even though he is old, even though it is all dedicated task, even though he has seen many bad harvests in his life. He is optimistic and having good grain in farm every time he tosses grain, because he is aware that time is lost forever. He is aware that this is the time to act, as he must be do important tasks at specific time. After the time has lost, we lost an opportunity to perform. Right, dosto? So in this video, we will see the poem Sower in detail with icebreakers question, line by line explanation on poem, figure of speech which will be 2 marks in the examination, and yes, appreciation of the poem which will be for the 4 marks. So watch the video till the end, and yes dosto, thanks for watching the video. And yes, if you need the notes of standard 11, standard 12, you can join my Telegram group. Link is given in the description box. The poem Cherry Tree with Appreciation is also created video. You will get the link in the description box. So stay tuned with Balushaeducare. Let's get started with icebreakers from the poem The Sower. See the questions. Make a list of words related to agriculture. So बहुत सिंपल है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको वर्ड्स यहाँ पे एनलिस्ट करना है. फार्मिंग, ग्रेन, farmer, plug, many related to the agriculture work. Now, next one, discuss the activities carried out by the farmer. Farmer की क्या-क्या activities होती है? Plugging, yes, which is already given. The next one, sowing, irrigation, and harvesting. In the next question, we will see in our country, engineering, teaching, medical fields are means उनको थोड़ा बहुत अच्छा खासा पेमेंट भी मिलता है. ये आप प्रोफेशन चूज करते हो और उनको एक थोड़ा अच्छा प्रोफेशन करके माना भी दिया जाता है. बट देयर आर मेनी थिंग्स मीन्स वहाँ पे let's get started with icebreaker from the poem The Sower. First, make a list of words related to agriculture. Agriculture से related जो भी words है आपको वो enlist करने हैं. Farmer, agriculture, grain, plugging, many words are here. Okay, now see the next one. Discuss the activities carried out by farmer. Farmer कौन-कौन सी activities करते हैं? एक तो plugging, sowing seeds, irrigation in the field, and harvesting. Seasons, right? See the next one. In our country, engineering, teaching, medicals के job है, उनको थोड़ा respect भी मिलता है और अच्छा pay भी मिलता है. लेकिन what about other profession, and they're doing their work wholeheartedly, but उनको रीबैक नहीं अच्छी तरह से मिल जाता. फर्स्ट वन है फार्मर, ऑलरेडी गिवन हाईली अनप्रेडिक्टेबल इकोनॉमिक गेन्स. यस, उनके लिए कुछ पता नहीं होता ना, कैसी बारिश आएगी या फसल कैसी रहेगी, अच्छी मिलेगी क्या, कुछ नहीं, वो अपना काम करते रहते हैं. द सेम अबाउट कंजर्वेंसी वर्कर्स, वो जो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं, उनके लिए तो इन्वॉल्विंग हेल्थ रिस्क होती है, डू नॉट गेट रिस्पेक्ट. नेक्स्ट वन इज हाउसमेड्स है. हाउसमेड
नो ओल्ड एज बेनिफिट्स, उनको कुछ पेंशन्स वगैरह नहीं देती, लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी, वो अच्छी तरह से काम नहीं करेंगे तो उनको अच्छा पगार भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट वन डेली वेज लेबरर्स होते हैं, डेली वेजेस होते हैं, उनकी अनसेफ वर्क कंडीशंस होती है, नो हाउसिंग, उनको हाउसिंग भी अच्छी तरह से घर भी नहीं होता, एजुकेशन हॉकर्स, अनसर्टेनिटी एंड बिजनेस। सो दीज आर द प्रोफेशंस इवन दो दे आर नॉट getting good revenue, how hard work even though they are doing. The next one, agriculture is the backbone of the Indian economy, right? एग्रीकल्चर पे ही हमारे इंडियन की इकोनॉमी डिपेंड है। और यहाँ पे आपको ये वेव कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे वन इज गिवन दैट एग्रीकल्चर बैकबोन ऑफ इंडिया, लार्ज पार्ट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व्ड इन एग्रीकल्चर, कंट्रीब्यूट अबाउट 17% जो इंडिया की जीडीपी है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। मेजर सोर्सेस ऑफ इनकम थ्रू द एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, उससे देश को इनकम मिलती है। एंड द लास्ट वन, वी नो दैट 60% ऑफ पीपल वर्क इन एग्रीकल्चर एंड इट्स प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, सो एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडिया। लेट्स नो अबाउट द पोएट। द पोएम द सोवर, written by Victor Hugo, the poet, novelist, dramatist of 19th century and most important of the French romantic writer। बच्चों हमें पोएट के बारे में, पोएम के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि हमें पोएटिक एप्रिसिएशन भी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Though regarded in France as one of country's greatest poets, he is better known for his novel L'Autre Dame de Paris, which was published in 1831, and Les Miserables, which was published in 1862. And the poem Sower, written in French by Victor Hugo and which is translated in English by Toru, who was a Bengali poet known as Toru, wrote in English and French, was born on 4th March in 1856 in Kolkata. She is considered the first Indian poetess to write verses in English and French. She translated dozens of poems and completed a novel before her death at age of 21. बच्चों यहाँ पे देखो, at the age of 21 उन्होंने बहुत सारे पोएम को ट्रांसलेट कर किया था, and she is also inspiration for us. Now see, and even though she died at the age of 21, her lesson, whatever she translated is we are reading now. So this is what we need to do in the time. Her poems such as Sita, Lotus and Kausrina Tree are well loved. So this is inspirational poem. About the poem, the Sower is translated of Victor Hugo's poem Cesson les Samiles les Sower. It is translated by Toru from the French to English. The Sower is a poem about a farmer who is sowing seed. He has seen many bad harvests in his life. However, he is so optimistic of having a good harvest every time he tosses the grain. Let's have a look at the poem now, and I will try to explain the poem line by line along with thorough insight with Hindi and English. Let's learn stanza first. Sitting in a porchway, cool sunlight, I see dying fast. Twilight has turned on to rule, walking hours have well high passed. Here, the poet is sitting in porchway. Porchway means जहाँ पे गाँव में वगैरह हम देखते हैं छत और नीचे बैठने के लिए जगह होती है, वहाँ पे, and it's cool means evening time. Poet is sitting in his porchway. We can see balcony. We can say balcony over here. Sunlight I see dying fast. अभी क्या है, evening का time है तो definitely sunlight अभी जा रही है. Twilight has turned on to rule. Twilight means जब भी sunlight जाती है और evening darkens हो जाता है तभी वो reddish पूरी light होती है, उसने पूरा आकाश है उसमें पूरा फैली हुई है. वर्किंग आवर्स हैव वेल हाई पास्ट. और जो काम करने वाले लोग हैं उनका भी काम हो चुका है, वो अपने घर की ओर जा रहे हैं. नाउ द पोएट सेज दैट वन डे ही सिट्स इन अ पोर्चवे entrance to enjoy the sunset. He watches the ruddy red sunlight fading away fast. तो poet is telling us that वो अभी पोर्चवे में बैठे थे और वो सनलाइट देख रहे थे, सनसेट देख रहे थे और साथ में वो ट्यूलाइट भी देख रहे थे. वो जल्दी से रेड लाइट जो निकल जाती है और अंधेरा छा जाता है उसको वो देख रहे थे. As the evening approaches, evening the twilight, the other words darken, start spreading all where. और उसी टाइम
वो डार्कनेस सब जगह फैलना स्टार्ट हुआ था. At such times when there is no light, the people stop their work, they are not seen anywhere as they go back to their home. और इवनिंग का टाइम है, सबने अपना काम खत्म किया था और अपने अपने घर में जा रहे थे. बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे पोएटिक डिवाइसेस इन द स्टैंजा फर्स्ट इटसेल्फ. पोएटिक डिवाइसेस के ऊपर भी वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. अदरवाइज लुक एट आई बटन, यू विल गेट द लिंक. फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये पूरे टर्म्स पता होने चाहिए, फिर ये बहुत इजी होता है, 2 मार्क्स के लिए होता है इन एनी पोएम. लाइन 2 में देखते हैं पर्सोनिफिकेशन है. कौन सी लाइन 2 है? सनलाइट आई सी डाइंग फास्ट. व्हाई पर्सोनिफिकेशन? बिकॉज ह्यूमन क्वालिटी ऑफ डाइंग इज गिवन टू सनलाइट, सो इट इज पर्सोनिफिकेशन. सेकंड वन, alliteration also is there because SS is repeated for poetic effect. See line 3 में personification also because Twilight Haston on to rule. Here, Haston is a human quality, right? It is given to the non-human object, that is Twilight. And in the line 4, alliteration, the sound W is repeated. Here you can see the highlight of W. And so here, for poetic effect, so here personification is alliteration. And बच्चों यहाँ पे rhyme scheme भी हम देखेंगे. So throughout all the stanza, the same rhyme scheme over here, like A B A B. Let's move toward the stanza second. Shadows run across the lands, but a sower lingers still. Old, enraged, patient stand. Looking on, I feel a thrill. Shadows run across the land. अभी क्या है? सब जगह पे shadow अंधेरा छाने लगा है. Okay, but a sower lingers still. Sower में जो farmer, जो खेत में काम कर रहा है, जो ग्रेन टॉस कर रहा है, सो लिंगर स्टिल, लेकिन वो अभी भी वहां पे कुछ करते दिखाई दे रहा है. ओल्ड इन रेज, ओके, वो ओल्ड है एक तो, और इसके जो कपड़ा उसने पहना है वो रॉटन है, वो ओल्ड है. ही पेशेंट स्टैंड, लेकिन वो अपना वो वहां पे वो खड़ा दिख रहा है क्योंकि वो अभी थोड़ा अंधेरा है तो पूरा तरह दिखाई नहीं दे रहा है. लुकिंग ऑन आई फील अ थ्रिल, और उसको देख के पोएट को एक थ्रिल फील हो रहा है. देयर इज नथिंग इन द लैंड बट द शैडो which should spread all over the places. However, among those shadows, the poets see one sower, the one who sows the seed, that is known as a farmer. Even though अभी कोई नहीं है खेत में दिख रहा है जो ऑब्जर्व कर रहा था लैंड को, और उसमें उसको एक आदमी की शैडो दिख रही है. He may be a farmer. He lingers. He stays there. He is old. और जो उसने कपड़े पहने वो भी rotten है, torn है, okay, पुराने फटे हुए हैं. Even though he stand patiently or watching him, the poet feel thrill. लेकिन उसकी जब भी पोएट की उसके ऊपर नजर गई तो उसको थ्रिल महसूस हुआ. अभी इतना अंधेरा हो गया है, लोग घर पे जा रहे हैं, लेकिन why this sower is here? And so he is getting that how it is. So this kind of thrill he feels. Let's see the poetic devices, figure of speech from stanza second. सी बच्चों यहाँ पे लाइन 1 में पर्सोनिफिकेशन है. शैडो रन अक्रॉस द लैंड बिकॉज ह्यूमन क्वालिटीज ऑफ रनिंग टू गिवन टू द शैडो. सी लाइन 1 and 2 में एंटिसिस है, अपोजिट आइडियाज ऑफ run and still, right? Run and still used over here for poetic effect, that is known as the antithesis. Line 2 में again alliteration है. You can see SS is highlighted for the sound S is repeated for poetic effect. And line 3 में inversion है. The order of the words are changed for poetic effect. Old in rages, he patient stand. So actually inversion में order होता है. वो सेंटेंस के ऑर्डर कौन सी होते हैं? S plus V plus O, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. लेकिन यहाँ पे क्या है, उसको थोड़ी प्रॉपर ऑर्डर नहीं है. तो करेक्ट ऑर्डर क्या है? He stand patient in old rages. So here is known as inversion. And yes, rhyme scheme A B A B. Let's move toward the stanza third. Black and high, his silhouette dominates the furrow's deep. Now to sow, the task is set. Soon shall come a time to reap. Now यहाँ पे the poet says the sower silhouette. Silhouette means यहाँ पे आपको देखते हैं कि बॉडी शेप, और जब ये परछाइयाँ, जब भी अंधेरा हो जाता है तो हमें समझ में नहीं आता कौन आदमी खड़ा है, लेकिन उसके हमें बॉडी शेप से समझ सकते हैं कि ये कोई ना कोई हो सकता है. ओके, ब्लैक एंड हाई, और जैसे कि अंधेरा हो गया तो उसकी जो सिलहौटी है, उसकी जो परछाई वो बड़ी बड़ी होती जा रही है. ठीक है. डोमिनेट द फ्यूरोज डीप. नाउ
to sow the task is set, लेकिन उसकी जो हो रही, लेकिन वो फिर भी आगे जाके वो टॉसिंग ग्रेन का काम कर रहा है ना, वो sow the task is set, लेकिन उसको पता है कि उसके जो टास्क है वो anyhow he want to complete, soon shall come time to reap, क्योंकि उसको पता है अभी उसको anyhow ही उसको उसी टाइम में कंप्लीट करना है, even though regardless of अभी कितना अंधेरा हुआ है, टाइम क्या हुआ है, it's time to go back home, रेस्ट लेने का टाइम है, खाने पीने का टाइम है, फिर भी उसको ये लग रहा है कि अभी ये काम उसको कंप्लीट ही करना है, बिकॉज टाइम नो वेट्स फॉर नन, और इवन दो ही नो दैट द एक ना एक दिन वो अच्छी तरह से उससे फसल आने वाली है. सो इट स्प्रेड ओवर डीप फ्यूरो विच नाउ इनविजिबल ड्यू टू डार्कनेस, लेकिन वो जो अभी टॉसिंग ड्रेन कर रहा है वो अभी इनविजिबल हो रहा है, वो क्या कर रहा है एग्जैक्टली. द सोवर मे बी थिंकिंग इट इज द टाइम टू सो द सीड्स एंड ही इज डूइंग इट. Soon the crop will grow and the sower will able to reap the fruit of hard labor and dedicated work. This stanza contains a lesson for young people. यहाँ से हमको एक लेसन मिलता है, क्योंकि हमें जो काम कर रहे हैं उसको हमें गिव अप नहीं करना चाहिए और सिचुएशन को ब्लेम नहीं करना चाहिए. They will able to get the fruits of dedication. जो सिंसियरली होल हार्टेडली जो भी हम काम करते हैं उसकी हमें सफलता जरूर मिलती है. जैसे कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहर से डर कर का पार नहीं होते. This is what everyone applicable for here. Let's move toward the poetic devices. In line 1, 2, 3, 4, everywhere alliteration. You can see here the words alliteration, repeated line, highlighted line wise, like sound H, D, S are repeated respectively for poetic effect. Line 3, 4 में inversion है. As I told you, the order of the words are changed for poetic effect. Incorrect order is given in line 3 और 4 में. Okay, और क्या है, now to saw the task is set, soon shall come a deep reap, और correct order क्या है, now the task is set to sow, a time shall come soon to reap. And rhyme scheme A B throughout the poem. Let's move towards the stanza 4. Marches he along the plain, to and fro, and scatters wide. From his hands the precious grain, muse I as I see him stride. Okay, जो sower है, the sower marches to and fro along the plain farm. Okay, जो वो काम कर रहा है तो आगे और पीछे जाके, जैसे अभी स्कैटर टॉसिंग ग्रेन कर रहा है ना, तो आगे और पीछे जाके वो अभी उसकी जो जर्नी है वो शुरू ही है, वो अपना काम कंटिन्यूली कर रहा है. एंड स्कैटर्स वाइड, और दूर दूर तक वो अपना टॉसिंग ग्रेन का काम कर रहा है. फ्रॉम हिज हैंड द प्रेशियस ग्रेन, और जो प्रेशियस ग्रेन बोला है बहुत वो व्हाई इट इज कॉल्ड द प्रेशियस, बिकॉज प्रेशियस इज वेरी वैल्यूएबल, बिकॉज उससे फल फसल उगने वाली है और हम सबका पेट पलने वाला है. एज वी नो वी आर डिपेंड, हम कुछ भी काम करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन जब तक किसान खेती में काम नहीं करेंगे तब हम क्या खाएंगे. सो दिस इज बिगेस्ट क्वेश्चन. सो द ग्रेन ही इज टॉसिंग in that land. So these are the known as a precious, and from his hand in the field. The grains are precious as they will grow into crops and will make the sower prosperous. And the poet becomes moody, sad by him by struggling so much. Or muse I as I see him stride. और लेकिन उसको पोएट को उसको देख के ऐसा लग रहा है कि how he is struggling, क्योंकि उसको लगा कल उसके अच्छे क्रॉप आएगी, फिर अच्छी फसल आएगी, उससे मैं अच्छी तरह से कमाऊंगा, लोगों को खिलाऊंगा. सो उसमें जो स्ट्रगल करने की इतना टाइम होने पर भी वो एक है, उससे पोएट एकदम सरप्राइज हो जाता है और उसको लगता है कि कितने लोग काम करते हैं, फिर अपने डेडिकेटिंगली काम करते हैं और तभी उसका फल मिलता है. Let's see the poetic devices. Line 3 and 4 में alliteration है, as sound H and S are repeated respectively. Okay, line 3 और 4 में है, highlight किया है. Repetition है line 2 और 4 में, ठीक है, 2 और 4 में, to and fro और 4 में, जैसे कि and I repeated in a line. A line 1 2 3 4 में इन्वर्जन है, जो ये है पोएटिक इफेक्ट देने के लिए जो वर्ड्स आर चेंज फॉर पोएटिक इफेक्ट. इनकरेक्ट ऑर्डर दी है और करेक्ट ऑर्डर है he marches to stand and through along the plain and scatters wide the precious grain from his hands. And yes, the same rhyme scheme over here, A B. Let's move to the last stanza, stanza 5. Darkness deepens, fades the light. Now his gestures to mine eyes are august and strange,
his height seemed to touch the starry skies. यहाँ पे पोइट इज टेलिंग अबाउट नाउ अभी डार्कनेस हुआ है और अभी पूरा लाइट चला गया है. Now his gestures are my eyes. Now he can see the eyes. और अगस्त जिस तरह से आप हमारा काम करते हैं, अगस्त means very sincerely जो काम करते हैं. Here they are not meaning of the August means those who are dedicating work. And strange his height seems to touch the starry sky. अभी इतना डार्कनेस हुआ है और वो दूर से ऑब्जर्व कर रहा है पोएट sitting in his porch पे, sitting in his balcony. तो उसको लग रहा है कि उसकी जो शैडो है वो स्काई को टच कर रही है and seems to touch the starry sky. उस तरह से जो वो काम कर रहा है definitely it will touch, उसको भी अच्छी तरह से उसका रिटर्न मिलने वाला है. So the darkness deepens, the night appears and the daylight is no more. अभी पूरा अंधेरा हुआ है. The poet cannot see the gestures properly. Poet को नहीं समझ में आ रहा है कि now Sower what he is doing. They seem to be strange which he cannot understand now. उसको ऐसा strange लग रहा है कि कौन है exactly Sower, it is there as someone else. In the final line the poet said the height of the Sower seems to touch to the starry sky. It becomes so dark and becomes invisible. और वो उसने अपना जो काम कर रहा है इतना टाइम तक वो काम कर रहा है कि उसकी जो शैडो है परछाई है वो स्काई को अभी टच कर रही है. एंड इवन दो ही इज इनविजिबल, अभी पूरा लाइट नहीं, फिर भी हाउ डेडिकेटिवली वर्क फार्मर इज डूइंग. एंड सो दिस पोएम इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक टू टेल अस whatever adversity we are facing, don't blame to the situation, do your work very sincerely. And we know once opportunity left, there is no opportunity. As we know, the farmer know that within that the season he has to sow, he has to harvest, otherwise nothing would be in his hand. So this poem is very optimistic, very encourages to the reader. Now let's see poetic devices. Line 1, 3, 4 alliteration, sound D, H, S repeated respectively. यहाँ पे highlight किया है in the passage. Inversion, line 2 and 3, the order of the words are changed for poetic devices. देखो the R, August, strange यहाँ पे order हो change किया. What is the correct order? Now his gestures are August of mine eyes. So ये inversion है. And yes, rhyme scheme A, B, A, B. Bachcho, I hope you understand the basic meaning of the poem, and let's move towards the appreciation of the poem, which will be for 4 marks compulsory question in the examination. So let's learn appreciation of the poem 2.2 The Sower by Victor Hugo, translated by Torulata Dutt. And यहाँ पे questions आएगा आपके with help of the following points you need to write appreciation of the poem. Let's start. बच्चों यहाँ पे आप appreciation point wise लिख सकते हो या paragraph form में लिख सकते हो. You will get the marks. So writing or attempting question is must. Okay. First point about the poem, poet and title. The poem, The Sower, is description for a lone farmer toiling in his fields. Toiling means roaming over here and there. As the poet watches even after sundown, Toru Dutt, in her translation of Victor Hugo's poem, speaks in praise of his dedication. वो फार्मर्स की प्रेज कर रही है. यहाँ पे एज इट इज आप एप्रिसिएशन लिख सकते हो या आपके भी मन का आप लिख सकते हो, लेकिन वो कंप्लीट अप टू पॉइंट होना चाहिए. इन योर वर्ड्स लिख सकते हो. द थीम, द पोएम इज ओवन अराउंड द थीम ऑफ द फार्मर serving his land, taking upon himself the hard work to till it, and plodding on into the night. Even after the day is done, he seeks neither help nor company, but does what needs doing. Next one, poetic devices, language style. The poet has used devices like alliteration, imagery, symbolism to create the scenes in the reader's mind. देखो यहाँ पे imagery, figure of speech बहुत टाइम यूज किया everywhere, because हम जब उसको रीड करते हैं तभी हमारे सामने वो पिक्चर क्रिएट होता है. The rhyme scheme is ABAB, providing a pleasing rhythm to read aloud. The language comprises words used in a manner to create a commanding figure of the farmer in order to emphasize the importance of his occupation and the toil it entails. Next, special features and novelties. The vivid description of dusk, setting sun and the
figure against the sunset. Sunlight, I see, time fast to light, darkness depends on still how to dominates. यहाँ पे स्पेशल फीचर्स में कौन कौन से ऐसे वर्ड्स है, कौन कौन से न्यू वर्ड्स है, ये आपको लिखना जरूरी होता है. और पोएम क्यों स्पेशल है? देयर इज यूज ऑफ पोएटिक लैंग्वेज एडिंग टू नॉवेल्टीज एंड ब्यूटी, जैसे कि इन्वर्जन बहुत टाइम, अलिटरेशन बहुत टाइम यूज किया है. दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी लैंग्वेज, लाइक डे टू डे की लैंग्वेज नहीं है. वेल नाई माइन आईज, हिज पेशेंट स्टैंड, म्यूज आई. In several lines, words are in a different order from which is used to normally. Furrows deep, marches along, fades the night. Inversion as a poetic device adds effect. और inversion जो poetic device use किया है, figure of speech use किया है, उससे poem और effectively और नहीं दिख रही, novelties इसमें दिख रहा है. And now see यहाँ पे point number 5, values and message. The poem gives a very important message. It brings into focus the importance of farmer and his unrecognized service to the society. Farmer जो काम करते वो recognize नहीं होता, लेकिन उनके बिना हम खा भी नहीं सकते ना, वो फसल नहीं उगाएंगे तो हम क्या खाएंगे. So even though their service is not recognized, however much money one may possess, one cannot eat the money. हमारे पास कितना भी पैसा हो, लेकिन हम पैसे को तो नहीं खा सकते, खाने के लिए तो हमें अनाज ही चाहिए. One needs the farmer for one's very survival. तो किसी को तो काम करना ही पड़ेगा, किसी को तो farmer बनना ही पड़ेगा. Next one, last point, your opinion about the poem. बच्चों यहाँ पे आप खुद का भी ओपिनियन लिख सकते हो. ये पोएम बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, पॉजिटिव है, इससे हमें क्या मैसेज मिलता है, ये सब अपने जो भी आपको समझ में आए खुद के भी लाइन में से लिख सकते हो, या यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हो. The poem is effective in creating a positive, respectful picture of the farmer. His simple life and solipsism is seen the way the poet described his actions. Dear all, I hope you understand the poem. यहाँ पे imagery poem में बहुत अच्छी तरह से यूज किया है. उसका थोड़ा हम एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि हो सकता है वो भी एग्जाम में आ जाए. What is imagery exactly mean? Word imagery create a visual representation of the idea, situation, reader's minds, help the reader to create mental picture with the help of the words. For example, यहाँ पे for the wow, what a scene of sunset at Marine Drive. Otherwise, what a scenes of sunset and इस तरह से. तो हम क्या करते हैं, हम वो विजुअलाइज करना स्टार्ट करते हैं. दिस इज व्हाट इमेजरी एवरीवेयर यूज इन दिस पोएम. एंड हियर आर फ्यू एग्जांपल्स लाइक twilight has turned on the roof. This line creates image of soft light in the sky just after the sunset. सनसेट होने के बाद जो रेडिश लाइट आती है ना, उसके हम जो जब ये होता है तो हमारे सामने सनसेट की इमेज आ जाती है, राइट. द सेकंड एग्जांपल, his silhouette dominates the furrow deep. The image of Sower created the reader's mind with his imagery, right. silhouette में जो उसकी इमेज है, अंधेरे में लोगों को हम किस तरह से देखते हैं, अंधेरा में जो हमें समझ में नहीं आता कौन खड़ा है, लेकिन उसकी हम परछाइयाँ किस तरह से हमें समझ में आती है उसके बॉडी शेप से, सो उससे भी हमारी इमेज क्रिएट हो जाती है हमारे माइंड में. सेकंड वन है सीम्स टू टच द स्टेरी स्काई. जो द पिक्चर रिफ्लेक्ट्स द ट्रांजिशन, जैसे कि पूरा भी डार्क हो चुका है, लेकिन उसकी जो सिलहौटी है, उसकी जो बॉडी का शेप है, उसका जो है वो स्काई को टच कर रहा है. तो वी कैन इमेजिन दैट ना, बिकॉज वी हैव सीन दिस scene also. So dear friend, I hope you understand this. Thanks for watching so much and all the best. Like, comment, share, subscribe. Balushaeducare.